I'm grateful. I'm grateful that the Youth Parliament of India 2019 allows for your voice to be heard. You base this entire debate or deliberation on freedom of expression versus censorship. I think the true base of this conversation can be freedom of expression and responsibility. I would just like to set a tone for the entire conversation with all your permission. The media and entertainment industry in the year 2019 has reached a size of 1,63,000 crores. And by the year 2024, the size of the industry will be 3 lakh crores by the most conservative estimations. When you talk about digital media, the figures are more astounding. Till 2016, we had 20 crore GB data consumption per month. Today, if you look at the numbers of even 2018, mobile consumption in India of data has gone up to 370 crore GB per month, which is huge. Today, when people talk about entertainment, their consumption of entertainment and information on the traditional media sites is 70%. And on the digital platforms, they spend around 25% of their time. But traditional media has a certain set of guidelines, and digital media, which is expected to grow in the forthcoming 5 to 6 years, continues to work without a set, not regulation, but a set code of conduct or a set code of guidelines. So the question that begets the audience and all of us today is that while we enjoy our sense of freedom, of speaking, of creating, we also constitutionally are mandated to be responsible so that others also enjoy that freedom. And I think that the House is now open for this discussion, this debate. The aspect which is to be also noted is that we talk about, especially in a youth parliament, about issues which are very intrinsic to our freedom of expression and speech. Today, there are only 2 women on this platform as compared to the 5 men. So my hope is that the next time the youth parliament engages in a debate or a discussion, let it be representative of gender as well. Okay, good afternoon, Ahmedabad. How are you guys doing? Very cleverly, Smriti ji has played both sides of the story and has said that definitely everything should be censored. But I agree with her about responsibility, and I think that's the most important thing. And when you watch an OTT platform, it doesn't say that there is no censorship. It's called self-censorship, because you're watching it in the confines of your own home, on your own gadgets, okay? There are people who want to watch different kinds of programs. It's a responsibility of parents and adults in that home to put restrictions on devices which you do not want certain children to watch certain shows. That responsibility has to begin at home. When you give that kind of take that kind of responsibility, you automatically, as a parent, become more aware of what your child is doing. I mean, you all are youngsters out here. We've just heard the kind of consumption of bandwidth that is being consumed. So there's a huge consumer audience out there, and you know where to go if I censor you, if I say don't watch this here or don't see this program, and if that child is curious enough, okay, he has 10,000 different platforms to go to, pirate it, rip it off, encourage piracy, watch it anyways. But I think the trust that you can build within the confines of your home with your children, and I am a father, okay, of 2 growing up daughters, so I'm even more wary about what they are doing, and the friendship that you can create with your family member, that when they come of age, they don't feel shy to watch something which otherwise they would say, oh, I didn't know this happened, or behave innocent about it when they're not innocent about it.
it's good to share it with your family. And so yes, I think what's happening today is great. There are artists who can, it's a huge industry that's opened up, which allows people to express themselves, to dig deep into their imaginations, you know, create amazing content, okay, which is family content as well. But yes, certain things, if you're talking about gangsters, or if you're talking about gang wars, or you're talking about, you know, some sexually explicit scenes or whatever, all those things do happen. And why should people say, no, you cannot watch that? And no, that is not in our culture. How can we say that? I mean, we have the largest population, one of the largest populations in the world, okay? So I think we are quite active in that department. So why shy away from things? It's better to talk to your young ones, your loved ones, your siblings, and open up a forum where you can speak within your home as friends. And I think that's why censorship, I believe, is something which is a rule, and the more rules you make, the more opportunity you create for them to be broken. Thank you, Arjun. Now, Raj will say a few words, then Manoj bhai, then Mihir bhai, and then we'll open the session. Means you can ask question to anyone, right? नमस्कार गुजरात, कैसे हैं आप लोग? स्मृति जी ने जो बात कही, अर्जुन सर ने जो बात कही, उनमें ही कुछ चीज़ें जोड़कर मैं कहता हूँ कि हमारा ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमेशा हम फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, कभी अकेले नहीं जाते हैं, यू नो। तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग एज अ राइटर, मैं जितने तमाम शो लिखता था या लिखता हूँ या आगे की जो फिल्में कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो सर ने कहा सेल्फ सेंसरशिप की बात जो कही है, हर कोई लिखता है। आप में से कई लोग लिखते होंगे, अपने अपने यू नो तरीके से लिखते होंगे, लेकिन क्या नहीं लिखना है वो राइटर का काम है। और वो जिस दिन हम एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर ये समझ जाएंगे कि ये चीज़ नहीं दिखानी है या इस चीज़ को रोक लग सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और बेहतर दिखा पाएंगे और बेहतर एंटरटेन कर पाएंगे आप लोगों को। थैंक यू। Manoj sir. Manoj bhai will now open. नमस्कार। यहाँ पधारे हुए सारे भारत के अलग अलग प्रांत से आए हुए सारे युवा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे पूर्वज यानी जैसे दादा या पिताजी बचपन में संस्कृत श्लोक पढ़ाते थे। सुबह उठते ही श्लोक बोलते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वो श्लोक आजकल थोड़ा उल्टा हो चुका है। कराग्रे वसते मोबाइल, करमध्ये मोबाइल, और करमूले गोविंद के जगह ही वो मोबाइल है। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले 12 बजे के बाद तक, 2 बजे तक, और सुबह उठते ही मोबाइल के बिना चैन नहीं पड़ता। यहां तक कि खरीदारी का भी रोग लग चुका है कि ये कहां तक जा रहे हैं हम। ये सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, तो डिजिटल माध्यम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, और यहां तक कि मैं अभी एक फिल्म करने गया था। उस फिल्म में रघुवीर यादव हैं, वो छोटी सी एक फिल्म लखनऊ में शूट कर रहा था। उसकी हीरोइन एक कोई नई लड़की आई, उसे कैमरामैन ने कहा तुम्हारे बाल आगे आ रहे हैं, जरा इसे हटा दो, तो रोने लगी। मैंने पूछा, ये भैया ये आप सॉरी आपको बुरा मत मानना, ये आपके लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत समझिए, आपने थिएटर किया है, कहाँ से आई है? तो बहुत ही आश्चर्यकारक जवाब था, नहीं मेरे टिकटॉक में 3 लाख फॉलोअर्स हैं। क्योंकि उसके टिकटॉक में 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर्स है, इसलिए उसे काम मिला है। लेकिन उसके अंदर कितनी टैलेंट है, क्या है, मैं उसकी अवहेलना करना नहीं चाहता। लेकिन सच में ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे व्हाट्सएप है, या जैसे भी सोशल मीडिया है, हमारे भारतीयों की जो इंफॉर्मेशन है वो भी परकियों के हाथों में जाने की संभावना है। इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। ओटीटी जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनका भी वो चिंतन का विषय है।
जैसे स्वच्छता मुहिम 70 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री को उसका आह्वान करना पड़ता है कि भैया अपना घर अपना आसपास स्वच्छ रखो। जिस प्लास्टिक को लेकर इतनी बड़ी आवाज उठी, वो प्लास्टिक हमारे घर में बस चुका था। प्लास्टिक के बिना हमारा संसार नहीं चल रहा है। आज ये कांच की बोतल देख के आनंद हो रहा है कि आज हमें अनुभव हो रहा है, आज हमें अनुभव हो रहा है कि ये प्लास्टिक हमारी जिंदगी का कंकाल करेगा, कैंसर होगा, जो भी होगा। समंदर में शहर के शहर बस चुकते हैं, इतना प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। तो ये भी कचरा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बहुत अद्भुत कही थी कि जो चीज आपको शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से यदि आपको खराब बना दे तो वो जहर है और उसको नकार देना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मॉरल पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। हर चीज में सरकार कुछ बंधन नहीं ला सकती सब जगह, लेकिन खुद को खुद का सेंसर बनना पड़ेगा और उसकी जागृति करनी पड़ेगी, तब जाके। अब जैसे मैं एक अभिनेता हूं, मुझे भी ऑफर आती हैं। मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, लेकिन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में मुझे ऐसा कहा गया कि आप आइए, आपको कितने पैसे चाहिए। सबको पैसे मिल रहे हैं। क्रिएटिविटी की आजादी के, अभिव्यक्ति के आजादी के रूप में हमारी मर्यादा का, अगर मर्यादा लांघ कर एक दूसरी रेखा खींचने की अगर कोशिश की जाए तो वह समाज के लिए विघातक होगा। यह हमें सोचना चाहिए। बस यही कहने के लिए हम आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मीर भाई। थैंक यू। एक तो यहाँ पर कुछ विचित्र प्रकार का ऑडियो फीडबैक है, तो कुछ एक बातें एक दूसरे की हमारे पल्ले कभी कभी नहीं पड़ती है, इसलिए हम कुछ बहरों की तरह बोले जाते हैं। आपको सब समझ में आ रहा है। एथेंस एक पुराने ग्रीस का के जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, ऐसे एक सिटी था, स्टेट भी था। वहाँ पर एक कोना होता था पार्लियामेंट के ठीक पास, और उस एक कुछ 10, 12, 15 स्क्वायर फीट की जगह, वहाँ खड़े रह कर के आदमी कुछ भी बोल सकता था। कुछ भी बोलने का उसे अधिकार मिलता था। वहाँ खड़े रह कर के वो सीजर को भी गाली दे सकता था, वो अपने बाप को भी गाली दे सकता था, कुछ भी कह सकता था। और उस मर्यादा में बोला गया शब्द, उसके खिलाफ कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता था। एज अ राइटर, एज अ media person, I think there should be some place where we can see anything. Youth can see anything. You can see anything. And I am incidentally part of the censor board. I understand the entire process of censor. अभी पिछली censor board meeting में कुछ बातें हो रही थी कि censor board में stakeholders कौन है। क्या फिल्म वाले स्टेक होल्डर? किसी ने इसे आपत्ति उठाई कि सेंसर बोर्ड है लेकिन यहाँ फिल्म वाले तो बहुत कम है, क्यों नहीं है? हालांकि जो बोर्ड है 24 लोगों का, उसमें तो फिल्म वाले हैं, लेकिन जो पैनल है 200-250 लोगों की, उसमें फिल्म वाले बहुत कम है। या उसमें फिल्म वाले बहुत कम है। किसी ने कहा कि सेंसर बोर्ड में स्टेक होल्डर्स फिल्म वाले हैं, उनका स्थान मिलना चाहिए। मैंने प्रसून जी से कहा कि स्टेक होल्डर्स तो ऑडियंस है ना, फिल्म तो बन चुकी, ऑडियंस को देखनी है, तो ऑडियंस के लोग बैठे और फिल्म को सेंसर करे, वही उचित है। फिल्म वाले खुद को सेंसर करे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जो दो बातें यहाँ कही गई, वो दो बातों का मुझे थोड़ा अपना विरोध है। एक तो ये कि सेल्फ सेंसरशिप जैसा कभी कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से सेंसर बोर्ड में हूँ। प्रसून जी से पहले हमारे एक बड़े दिग्गज निर्माता सेंसर बोर्ड के, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा,
उन्होंने जो फिल्में बनाई अपनी ज़िंदगी में, सेंसर बोर्ड में आने के बाद उन्होंने पूरा रंग बदला था। और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पद से उतरने के बाद उन्होंने जो फिर से फिल्म बनाई, जब पूछा गया कि ऐसी फिल्में आप, और वहाँ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तो आप कुछ और बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मार्केट फोर्सेस है, हमें तो करना पड़ता है धंधे के लिए। इसका एक अर्थ ये होता है कि मार्केट फोर्सेस विल रूल, मतलब सेल्फ सेंसरशिप जैसा कुछ होता नहीं है। और दूसरा मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं हमें सेंसरशिप की प्रवृत्ति को थोड़ा सा कम भी करना पड़ेगा। आप जितना सेंसरशिप टेलीविज़न पर हो सकता है या होना चाहिए, उतना शायद OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए। आई डू नॉट नो, दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस, दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड, बट माई कंटेंशन इज दैट देयर शुड बी some limitation to the censorship. मैं बात पूरी करने से पहले 2 जोक सुनाता हूँ। अच्छी जोक नहीं, आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन बड़ी गहरी जोक है। एक बार पत्नी अपने पति की कमीज़ पर बटन लगा रही थी और बटन लगाते हुए कहा कि देखा, हम औरतें नहीं होती तो आपके कमीज़ को बटन कौन लगाते। पति ने कहा कि आप औरतें नहीं होती तो कमीज़ कौन पहनता। ये सेंसरशिप का सिद्धांत है, दूसरे का लिहाज है। औरतें हैं तो पुरुष कपड़े पहनते हैं, पुरुष है इसलिए स्त्रियां कपड़े पहनती हैं। ये हकीकत है, सिंपल लॉजिक है। ये एक दूसरे के लिहाज की बात है, वहाँ से सेंसरशिप की शुरुआत होती है। लेकिन एक दूसरी जोक भी सुनने लायक है, और चूंकि सेंसर बोर्ड का सदस्य रहा हूँ मैं पिछले 5 साल से, मुझे ये दूसरी जोक भी दिखाई दी है अपने आसपास होती हुई। एक महिला ने फ़ोन किया पुलिस इंस्पेक्टर से पुलिस स्टेशन में कि मेरे घर के बाहर एक नदी है, वहाँ पर कुछ स्त्री पुरुष बिना कपड़ों के नहा रहे हैं। तो इंस्पेक्टर दौड़ा हुआ आया, देखा कि 4 से 6 साल के बच्चियाँ बिना कपड़ों के वो नदी में दिंगा बस्ती कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि ये स्त्री पुरुष है, तो कि हाँ बिना कपड़ों के देखो, अब हटाओ। इंस्पेक्टर ने कहा कि चलो बच्चों भागो, वहाँ से आगे जा कर नहाओ। उनको दूर खदेड़ दिया। वो पुलिस स्टेशन आया, फिर से उस महिला का फ़ोन आया। महिला ने कहा कि वो बच्चों को आपने हटाया नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा हटाया ना, वहाँ दूर भेज दिया उनको। तो कि नहीं, मुझे दूरबीन से अब भी दिखाई दे रहे हैं। सेंसरशिप इस हद तक भी नहीं हो सकती। क्या मर्यादा है वो समय तय करता है, वो आने वाला समय तय करता है, और वो आप लोग तय करेंगे। थैंक यू। We're now opening, you can see us completely accelerating the session because we have a slight time constraint and Smriti ji will have to leave. So we now open the session for question and answers. Requesting you all कि सवाल पूछिए, अपनी खुद की तारीफ या कुछ पे वक्त मत ज़ाया कीजिए. Stick to a single question, ladies and gentlemen. So do I have a show of hands? Volunteers? Those who want to ask questions, just pass the mic around. You see those people in the red shirts? They have the mics. Could you also get another mic, or this is going to take long? My question to you is that we see that in mainstream media or on television, we have serials which promote child marriage or many such other relevant issues, but they are portrayed in a negative sense. However, we see that digital media has actually spread a lot of awareness amongst the youth, which is why they are preferring these methods over the mainstream media. So what is your view on that? Why should... Ma'am, your name? Yashvi Sanghani. Yashvi, it's a very, very pertinent question. I have 2 takeaways from what Arjun said and what you have said. Yes, it is true that the youth move towards digital media because they want different creative aspects that digital media throws up. More information, or for that matter, more experimental scripts. But the reality of our country is that mostly we are one TV set homes and families, which means you have one device which an entire family can sit and watch together. It is a different realities in our cities. Now, insofar as you saying that TV serials manifesting a stereotype which is essentially not gender friendly, I agree.
And that is where what Arjun said, that it depends upon you and how you educate your child to use a particular creative source for entertainment or not. That is where that manifests itself also. But everybody feels that when we talk about responsibility, that responsibility has to be self-sustained. Where I differ a little is that, for instance, I'll give you a very small example. We all know child pornography is illegal. More than illegal is something we all abhor as individuals. But till such time that we had a law which came in the last session, amending the protection of children from sexual offences, which made child pornography online punishable for life, we did not see a surge in FIRs. Today, we have 377 websites which have been told to take down their content because their content, though creative, was actually exploitation of children online for pornographic reasons. Second aspect, people presume that when we talk about responsible creativity and a set of guidelines, that possibly this is just the Indian cultural mindset of old people who don't understand the freedom that the young want to enjoy. But today, when you talk about responsibility and guidelines, the United Kingdom has it under the Broadcasting Act. Japan, EU, they all want it. Why they want it is because when you look at worldwide consumption of online content, between the age of 15 to 24, you'd be shocked, 71% of the youth, global youth, uses online content for their personal consumption, as compared to 48% of the other total global population, which means we have more and more young gravitating towards these platforms because they want to experiment with different creative standards or fields. But, like I said, with rights come responsibility. Who will impose that responsibility is a matter of debate and discussion. But I also want to hear Yashasvi flag one thing. Today, UNICEF reports that girls, yes, report sexually violent content online, somewhere around 32%. But the equal number of boys also reporting. 33% boys reported. Which means this is not an issue only about women, it's also young, responsible men who are reporting violent content which sexualizes women and creates an insecure environment for children. And I'm sure every youngster here is responsible enough to know that yes, we want to enjoy our freedom, but at the same time, we don't want to endanger a child or a woman in a sexually explicit environment. Hi everyone, I'm Shahzad. My question is to Smriti ma'am. Ma'am, you have been always vocal towards gender equality and your complete journey is an example towards that, your journey from the television industry to becoming the cabinet minister. But ma'am, in today's time, in the television industry or in the cinema, there has been complete objectification of women. The female characters are objectified, and the people, they actually enjoy that things, especially in the item songs. So ma'am, how do you see this thing, the objectification of women, and how can we stop this or do things to tackle this problem? Because So the problem is the chicken and egg problem, Shahzad. The creators say ki we have a market for it, hence we are creating it. For me, what I would take extreme umbrage from or be extremely concerned about is the number of people who are consuming that content. So you're right that this is a challenge which we need to address both on the creative front and on the front of consumption. Because the creative person, as Bhuta says, wants a space where they can express themselves. But item songs are not new to Indian entertainment. Please remember, you've had Helen, who used to be a huge star, which means that progressively we have seen content about women or objectification of women be a matter of debate. But Shahzad, you'll be horrified to know that the government 1.5 years ago started creating a database, online database of sexual offenders of children and women. And today we have data on 7 lakh known sexual offenders who rape, who molest, who sodomize children. And when the Nirbhaya rape happened,
academicians in fact said in their researches that those who were arrested for the crime, the rapist, had access to pornographic material on their digital devices. So yes, I applaud the fact that we are a creative force unto ourselves. We've had a history, a cultural history of being extremely creative, a cultural history of challenging nuances. But like Raj made a film called Dream Girl, correct? Now, Dream Girl is not a regular run-of-the-mill movie. It actually uses a very explicit issue, but does it very nuanced way and very, I think, I haven't seen the movie, but what I understand of it, ashleel nahi hai. So we have to know where to walk the path, and it's equally the responsibilities of those who consume that content, not to pontificate then about women's security and children's rights. आदरणीय सर, मेरा प्रश्न केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ऊपर जो सर ने बात कही उसके ऊपर है। किनसे क्वेश्चन आपका? आखिरी में जो बैठे हैं सर। वो सज्जन मेरा माइक ले गए तो मुझे लगा। नमस्कार सर, मैं आशीष कोटड़िया बड़ौदा से। सर मेरा प्रश्न है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भूमिका के ऊपर। सर 1969 में घोंसले समिति बनी, पीके वेनेगल समिति बनी, इन सारी समितियों ने ये सिफारिश की कि जो 250 मेंबर का जो ये बोर्ड है, इसमें से 66% मेंबर ऐसे होने चाहिए जो प्रोफेशंस वाले हो, क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसलिए ये भी इन लोगों ने ये भी सिफारिश की कि केंद्र सरकार का फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ऊपर से आधिपत्य कम हो जाए। तो इस बात पर आपके क्या विचार है? ये इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहले तो आप बैठ जाइए, मैंने आपको देख लिया और मैं पहचानूंगा नहीं वहाँ जाकर, बाहर आकर मिल नहीं कहूँगा, बैठ जाइए। हाँ, 3-4 पहलू है। सबसे पहली बात ये है कि पहले तो ये समझा दूं कि बोर्ड जो है वो 24 लोगों का है। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, फिल्में बढ़ती गई, आज 15,000 20,000 तक फिल्म यूनिट्स बनते हैं। फिल्में, छोटी फिल्में, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोमोज, गीत वगैरह मिला करके, तो वो सब देखने के लिए एक बड़ा एक्सटेंसिव एडवाइजरी बोर्ड या पैनल होता है। जिन निर्माता को पैनल के क्या कहते हैं, निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वो बोर्ड के पास फिर से आ सकता है। बोर्ड में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही होते हैं। मुझे लगता है अभी जो बोर्ड चल रहा है उसमें 2 ही लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सो ये कहना कि जैसा कि मैंने कहा कि फिल्मों के स्टेक होल्डर जो है ना, वो सिर्फ फिल्म वाले नहीं हैं। फिल्मों के स्टेक होल्डर्स एक्चुअली ऑडियंस हैं, आप हैं जो फिल्में नहीं बना रहे हैं लेकिन देखने जा रहे हैं, वेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपकी बात आपके नज़रिए से सेंसर बोर्ड चले। इसलिए ये ज़रूरी है कि फिल्म मेकर्स नहीं, पैनल के अंदर आप में से लोग हो। ये ठीक ऐसा है कि अगर आप साबुन बनाते हो तो उसको जज करने वाला मैं हूँ ना, मैं साबुन यूज़ करता हूँ, आप तो नहीं करते, मतलब करते होंगे लेकिन आपको आपका साबुन है, आपको पसंद आता होगा, मुझे नहीं आया तो इसी नज़रिए से आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैनल में होने ज़रूरी नहीं है। ये पहला प्रश्न। दूसरा, राजनीतिकरण। न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी सरकार के हस्तक कुछ होता है वहाँ थोड़ा सा राजनीतिकरण हो ही जाता है, क्योंकि सरकार बनाते हैं पॉलिटिकल पक्ष। लेकिन आपको इसके साथ एक बात ये भी भारत के बारे में जाननी चाहिए कि स्मृति जी से पहले माननीय राज्यवर्धन राठौड़ साहब थे। जब मैं पहली बार बोर्ड में आया, उन्होंने मीटिंग करी थी, मैं उसमें हाजिर था। लोगों ने कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री को सौंप दो ये सर्टिफिकेशन का काम। राज्यवर्धन साहब ने कहा कि आप ले लो, आप एक बॉडी बना कर ले आओ कि ये लोग होंगे, हम इस तरह से बॉडी, इसमें इस तरह से चुनाव की प्रोसेस होगी, इस तरह के पैसे दिए जाएंगे, इस तरह से बैठक होगी, इस तरह से ये हमारे सिद्धांत होंगे फिल्म सर्टिफिकेशन के। उनको पूछा गया था कि आप ले आइए। गुलजार साहब खुद बैठे थे, जावेद अख्तर साहब बैठे थे, सबको कहा था कि आप ले आइए।
आप बॉडी बनाकर ले आइए, हम सरकार आपके हाथ में दे देंगे। उस बात को आज 7 साल हुए, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कुछ नहीं किया। और जो काम कोई नहीं करता वो सरकार को तो करना ही पड़ता है। इसलिए जो लोग ये आरोप करते हैं कि राजनीतिकरण है इसलिए आप सरकार को छोड़ देना चाहिए, छोड़ तो दें, लेकिन वो टार्जन जब कूदता है तो एक बेल को पकड़ने से पहले दूसरी बेल छोड़ता नहीं, वरना गिर जाएगा। सरकार को तो संभाले रखना पड़ेगा ये, जब तक के फिल्म इंडस्ट्री वाले हाथ में ना ले लें। तो ये दूसरा आपका पहलू है। और कुछ आप पूछना चाहते थे? आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट। Ma'am, we can take more questions. Hello, Namaskar. I'm Dr. Manisha Vyas from Surat, and I consider myself young because I'm the mother of a youth and an educationist. I'm a professor in a college at Surat, so I am young. And my question is that if we have an access that we can, we can control what programs should be watched by our children, but we don't have a control on the advertisements which come in between the programs and how to monitor that, because either we send our children to go and bring something from the kitchen and it becomes difficult. Thank you, ma'am. Manisha ji, from one young person to another. I think that both for television content and for advertorial content, we already have an industry-based council that looks at objectionable material, and on the basis of the submissions of general citizens, nothing to do with government, it's the industry stalwarts who sit together and take away that objectionable content. So that system exists. I think what is needed is more information so that access is enabled for citizens to reach out to get some kind of solution or some kind of reprieve. So for both television content, Yashasvi had spoken about television serials. If, in fact, when I was the officiating INB minister, we did have an issue with one television channel showing child marriage and, the relationship between an older bride and a young kid. Yeah. And we had taken that objection, and ultimately that serial had shut down. So there are premises available, there are agencies available, not led by government, and you can use it. Are there any more questions for Smriti ma'am? Ma'am, can we take one or two more? Smriti ji, can we take one or two questions more? Quickly, yes. Sir, the mic's there. If you could let the students ask a little, that's a great opportunity for them, yeah. Good morning. And basically, the youth is curious about censorship because we think that the purpose of censorship was to hide or not let us see what is controversial or what is objectionable in the cultural sense. However, sometimes we feel that there is a lot of information that we were supposed to know which was hidden. So how do you think the censorship in general is going to stay independent of any or free from any biases which are involved? There will always be a bias. And why so? Because whoever is creating that content gets their objectivity or their understanding of that matter onto that creative platform. Hence, anybody tells you that content will be free of a point of view of the creator is actually misguiding you. But what you've said is extremely essential to understanding the meaning of censor. There was a time when the information and the device for that information was limited. Today, because of the digital explosion, you have various ways and means of getting that information. There was a time when whatever you needed to know, let's say about politics, would only be restrained to a newspaper. That time is gone now. आज आप हर 10 मिनट में न्यूज़ बदलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप उस न्यूज़ को समझ सकते हैं, कल की न्यूज़ बासी हो जाती है. So that is true, and that is, but anybody who tells you that my point of view will not find a reflection in content is doing you a great disservice. The only difference is that digital platforms, or for that matter, various means of getting information today, give you enough space to consume all kinds of information and then decide what is most appropriate for you.
Priti ji. Okay. Good afternoon, all of you on the dais and off the dais. My question is that CBFC have almost banned 800 films in past 16 years. This was a report. And being a law student, I have seen that obscenity is not defined, abusive content is not defined, but we all know that we follow all the Bollywood stars and all, we follow them, we wear the clothes like them, we try to copy them in each and every sense. Like for example, if we have a digital content, a recent controversy regarding sacred games, and if people are abusing, I have seen people, those who are abusing and telling themselves as Gaitonde. 6-year-old child was saying that I'll shoot you there. So this is the impact which the online contents are creating on children, and the report says that these children are getting more aggressive in nature. So we are in a country with huge diversification, we say that we have cultural diversity, Sanskriti. So it is not always on us to censor each and everything. And if CBFC is there and censoring the films and taking out each and every step on this, so why not digital content? It's not a question. It's a statement. And Arjun will answer. See, firstly, why was that child watching that? That is the question one needs to ask. Where was the child's parents? Who gave him that mobile phone? Because whatever you can watch an OTT platform on is a device which has to have a parental lock. So why was that not activated? It is not. So that means that's carelessness of an adult. That means you as a parent yourself, did you stop that child and say, where did you see that? Give me your phone. You're not allowed to see that. You should have done it. You're an intelligent man. You should have said, this is not a program that you should be seeing. And that kind of awareness is very, very important, where you help each other. Why don't we do that? What's happening, I feel, in terms of the digital space, if it is Instagram, Twitter, Facebook, we all are isolating ourselves. And that's scary. That is scary. We take fake names, fake IDs, we are isolating ourselves, but we think we have a lot of friends. We don't. Your friends are at home. So it's important to connect with yourself. These kind of shows, when they come on, there are programs which are very, very, you can learn a lot from them. Recently, I saw a show called Game Changers. I became vegan after that because, and it has had a huge impact in my life. And I think that is what I would like to introduce to my children. So how you filter what you want to show your children is all in your hands. And that's when you spend time. Like Smriti ji said, that there is just one television there. Take that time out to spend that program that you're going to watch before your child's come from school, had his dinner, gone, played outside, come back, want to watch TV for 2 hours. You curate what that person needs to see. Because yes, that child's mind is very, very influenced at this time. They're like sponges. So it's our responsibility to do that. Check their devices, see what they're doing on Twitter, follow them, follow them on Instagram, and you will know what your child is up to. It's easy to connect, okay? And if you are aware to monitor it, if it is and you can see that kind of aggression coming, you make sure that that kid doesn't see it or doesn't have access to it. I'll just try to supplement for the lawyer there something that Mr. Rampal said. Everybody and the lady here who spoke about consuming more and more information with regards to censorship. One of our biggest problems is today that we feel that if we want any information, it is only digitally available. And from a very young age, we tell the child that even if you want to take extra maths classes, तने एक app download करी આપીશ આવે છે ગુજરાતી હા એટલે ચેક કરું છું ભાઈ મને કીધું કે દેશ આખાથી લોકો આવ્યા છે if you download an app you will learn maths or let's say language or social science on that app. That means you've habituated a child to getting information from a digital device. But since you do research, please look at a New York Times research and an OECD research.
They did a research comparing absorption of knowledge and information, digital device versus books. And every kid who had access to books was retaining that information far better as compared to children who were consuming information from a digital device. So even if you want to retain some part of knowledge, the best source for retention of knowledge till date is books. So it's also about whether as a parent, and this is only for parents, as a parent, do you think that everything is possible only on a device, or would you inculcate the habit of reading out to your child or encourage your child to get a book instead of an iPhone? The session has not ended, ladies and gentlemen, because our student speakers are going to wait. We will do the question and answers, but Smriti ma'am is in a hurry. One request before you go. Okay? We have to take an uncensored selfie with all of them. Yeah? Ladies and gentlemen, we are continuing with the session. Smriti ma'am, thank you so much. A huge round of applause for Smriti ma'am. Requesting you all to stay back because we have our good student speakers as well who will now take the forum. After that, Arjun sir, Raaj sir, Manoj bhai, we are okay with opening it for more questions. Can we ask the student speakers to come now? Sir? Student speakers बोलने? बुला लें उनको? ना आलो को सर आलो को જમીને આવ્યા છે. The good Gujaratis here. પણ અમે તમને બહાર જવા નહીં દઈશું કારણ કે હવે બાળકો બોલવાના છે. And that's the voice of the country that we want to listen to. I'll take exactly a couple of seconds to tell you. Youth Parliament of India 2019, we got around 500 essays as entries. We have had rounds and rounds of selection. 37 students have made it there from all over the country. So a huge round of applause for these 37 kids. And now, without further delay, because we've had the top people talk about stuff, this is a forum for the students, of the students, and by the students. So let us, before we start, say a big hi to our jury members who's going to be judging the student speakers who are going to be winning some amazing prizes at the end of the day. Dr. Falguni, just say hi, who's a jury member, social media influencer. She runs her own fashion app, also a physiotherapist. So huge round of applause as our students are greeting them right there in the corner. The next is Mr. Wasim Habib, who's a marketing genius associated with various brands, runs a digital media company, and also an aspiring stand-up comedian. Ladies and gentlemen, Wasim Habib. And without further delay, I'm going to invite our first student speaker for today, Ashish Shinde from Nirma University. Nirma, guys. You want to put it afterwards, Arjun sir? Yeah. You want... Continue the Q&A. You want to continue? We thought we're taking... Okay. Okay, but then you'll be there to listen to them, right? So, okay, we'll start with more questions. Okay. Hello. Hello. My voice is audible? Hello. Who is going to ask the question? Raise the hand. Yeah. Ask. Hello, myself Aishaman Mitra, and I have a question regarding nepotism in Bollywood. And as you are people from film industry, I really want to ask, only Kangana Ranaut talks about nepotism, बाकी तो कोई बोलता ही नहीं है और सब डरते हैं. और सबसे बड़ी बात जो मुझे ये पूछनी है कि हम मिडिल क्लास लोग कभी भी मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते ही नहीं कि बेटा तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाएंगे. इतना ज़्यादा वहाँ पे सील्ड पैक्ड जो ये हो रखा है. आई रियली वांट टू आस्क कि आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं
CBFC मेंबर्स कि वहाँ पे हम जैसे लोगों के पेरेंट्स भी ऐसे सपना देख सकें कि हम जाएं। हालांकि वहाँ पे मिडिल क्लास लोग और इवन लोअर क्लास लोग भी हैं, तो लोअर क्लास इज रियली अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन नीचे तबके के लोग भी आते हैं, लेकिन फिर भी आज भी इतना सील्ड जो पैक्ड है। और जैसे कि मैंने देखा कि वो के कवर पे लाइक शाहरुख खान की बेटी का फोटो था, so I found it very like it's really wrong, like she hadn't done anything like she didn't even contributed to film industry, but it's really wrong. So I want to ask regarding the nepotism that's happening in the Bollywood. Thank you. यहाँ एक ही CBFC मेंबर है, वो मैं हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि CBFC का ये काम नहीं है कि आपकी करियर बनाए। आगे अब अर्जुन जी बताएंगे। Nepotism. It's a अभी डॉक्टर का जो बेटा होता है, he is usually pushed to become a doctor. वकील का बेटा होता है, उसके या बेटी होती है, उन्हें बोलते हैं कि आप वकील बन जाओ. You know what surroundings you grow up in is usually where you are pushed towards. अगर आपके अंदर वो बात है कि आपको एक्टर बनना है या आपको एक्टिंग करनी है, then there are lots of places you can go and learn to act, and you have to try, you have to come to the industry, you have to try. मेरा कोई नहीं था, I didn't have anybody from the industry. मैं खुद आया हूँ, जब शाहरुख भी आया था उसका कोई नहीं था. ओके तो अब उसकी जब बेटी करना चाहती है तो ऑब्वियसली एक बाप अपने बेटी को हेल्प तो करेगा ही ना, won't he? Wouldn't you help your own child? Won't your parents help you to do whatever you want to do? So, but finally, it is up to that child, if he comes from a family which has got a film background or doesn't have a film background, it's up to each individual how hard you work, how lucky you are, what kind of breaks you've got. Yes, it is a difficult industry to come into. I agree. I've struggled a lot in this industry. I'm still struggling. Okay, but it is an industry which takes time. You have to understand it, learn it. It is an art form which you do have to go and practice. Go do theatre. You know, there are lots of wonderful casting agents now who you can go to, give your portfolio to, and they will help you get work. You're seeing so much new talent, and thanks to OTT platforms, so many youngsters are getting launched every single day in different shows, who don't come from a film background and are wonderful talents. So if you're a good talent, you're going to work, and you should not think कि उसका ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है. और कोई डरता नहीं है बोलने से. अगर किसी का बेटा बुरा है, the audience decides कि इसका बेटा is not a star, I don't like him, and they're going to stop watching his work. You have to create your own fan following, and I think that's the only way in any profession you have to do it. You have to put in the hours, you have to put in the hard work. Okay, let's just. So, ma'am, could you just hold that question for exactly a second? Because I'd like to invite on stage Param Pujya Guru Prasad Swamiji, who's a yogi from Divine Society. On stage, he's backstage. So, if you could just welcome, sir, with. Thank you so much. The lady there with the mic. Hello. My name is Rajvi Kachar, and my question is that the body CBFC called Central Board of Film Certification, but we know, according to our records, the Indian Censor Board is actually facing the identity crisis in India. Then how we believe in it and call them a perfect censor board in India?
and why they have facing a so much crisis? Again, there are two aspects to this statement. First of all, yes, it is not a censor board, it is a certification board. It is called Central Board of Film Certification. Please sit down. It is a certification board, and see, this is where the market economy comes into force. If your film gets a certificate, you cannot sell it on television, you cannot sell it on certain web platforms, you cannot sell it on you get your audience quantum is restricted. So every producer that comes to the censor board, certification board, wants U certificate or at the most UA certificate. Now what happens is that censor board says we cannot give you this kind of material. There are these kind of objectionable words or visuals. We cannot give you U or UA certificate. We have to give you A certificate. Either take it or remove these objectionable material and modify your film. We do not call it censored, we do not call it cut, we call it modification. Film needs to be modified to get the UA or A certificate. UA or U certificate. Unless if you are ready to take A certificate, you will be surprised that there are certain film makers who come to us and say that we want A certificate, sir. Don't give us UA certificate. वो क्या है हमारे गांव में सब चलता नहीं है फिर A certificate नहीं होता है तो audience नहीं आती है. There are such people. So yes, this is a certification body. This body only certifies film. And if you want a different certification, if you are requesting for a different certificate, in that case you are requested to make certain modifications. So this is not a censor board in that sense, but yet you have to modify your films. That is one. Secondly, I did not understand the statement that censor board or film certification board, CBFC as it's called, is suffering from identity crisis. Why do you think that? Why do you think censor board, CBFC is suffering from identity crisis? I don't think there is any. Next questions. I request the volunteers to keep the mic ready. When you get the mic, you please answer me. We actually all know that according to records, many movie like Lipstick Under the Burqa, that time sir सबसे ज़्यादा crisis चल रहा था इंडिया में उस movie को लेकर, and everyone says that CBFC also CBFC को खुद की identity नहीं है, वो movie को क्या identify करेंगे? हाँ लोग देखिए सेंसर बोर्ड को CBFC को समझिए, वो एक एक्ट है, फिल्म सर्टिफिकेशन एक्ट है. एक्ट के तहत एक संस्था क्रिएट की गई है. इट वर्क्स अंडर द एक्ट. एक्ट के अंदर 3 पन्ने भर करके कुछ गाइडलाइंस हैं. इतनी मोटी सी किताब है एक्ट की, जिसमें ज़्यादातर तो कितना पगार मिलेगा और कौन लोग बैठेंगे और कैसे संस्था का गठन होगा वो सब है. गाइडलाइंस है इतनी. उस गाइडलाइंस के आधार पर पहले पैनल मेंबर्स देखते हैं. पैनल मेंबर्स का एक वर्डिक्ट आता है और प्रोड्यूसर को पसंद आ जाए वो सर्टिफिकेट लेकर घर चला जाता है, रिलीज़ कर देता है. अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो रीअप्लाई करता है फॉर रिविजन. इट्स कॉल्ड RC, रिविजन कमेटी. रिविजन कमेटी में एक बोर्ड मेंबर बैठता है और 3-4 पैनल मेंबर बैठते हैं. फिर से फिल्म देखी जाती है. वो पसंद ना आए तो एक ऑप्शन फिल्म मेकर के पास होता है कि वो तीसरी बार चेयरमैन को रिक्वेस्ट करके वो खुद देखे, जो पॉसिबल है. या FCAT है. FCAT is a tribunal body of constituted under the same act. उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. तो ये एक एक्ट है. जैसे
लोअर कोर्ट कोई एक वर्डिक्ट दे और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उल्टा कर दे, तो उसका मतलब ये नहीं कि लोअर कोर्ट का कोई महत्व नहीं है और लोअर कोर्ट को आइडेंटिटी क्राइसिस है, नहीं। लोअर कोर्ट का ये काम है, वो अपना वर्डिक्ट देता है, फिर दैट गोज एफकेट के अंदर हमारे जज बैठते हैं, तो उनका नज़रिया अलग होता है, बोर्ड का नज़रिया अलग होता है, अपने और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया अलग होता है, हो सकता है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है CBFC में, ऐसी बातें फैलाई गई बीच में, और ख़ासकर के आज से 3 साल पहले, मैं जानता हूँ वो, और जब से प्रसून जी आए हैं ऐसी बातें होना बंद भी हो चुकी हैं, और उसकी कुछ वजह हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं तो दोनों ही बोर्ड में रहा हूँ इसलिए। सो एसेंशियली यहाँ कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, और आप में से कोई फिल्म मेकर हो, आपको रिड्रेसल सिस्टम विद इन द एक्ट इटसेल्फ इज देयर। Actually, I want to ask a question to Mihir sir. Sir, why do we have U, UA and A? I mean, U is universal, सभी जाके पिक्चर देख सकते हैं। UA में आप बोलते हो कि you can take a baby also into the theater. Then obviously, if it is you're giving accompanied by an adult, okay, why can't we have the systems that the whole world follows, which is on age-wise, that it's parental guidance, you can have to see it only with a parent, okay? It is U, which universally anybody can see, or it's 13 and above, 15 and above, because mindsets of individuals change tremendously between 13 and 15, between 15 and 20, you know, and then 18 and above, you say, okay, everybody can watch it. Why? Because of just having a U, UA, and an A, it does create a tremendous amount of difficulty for filmmakers to actually say what they're wanting to say, but also being restricted to say, oh, but I lose this huge chunk of an audience if I make it in this manner. अर्जुन जी की बात बिल्कुल सही है। As a writer, as a media person, let me tell you that I honestly do not believe in any kind of censorship per se. I don't believe in it. जैसा वो मैंने जोक में कहा था कि एक लिहाज होता है, औरतें हैं इसलिए मर्द कपड़े पहनते हैं, मर्द हैं इसलिए औरतें कपड़े पहनती हैं, सिर्फ औरतें ही होती तो कौन कपड़ा पहनता। लिहाज होता है दूसरे का, इसलिए थोड़ा सा सर्टिफिकेशन, थोड़ा सा सेंसरशिप होना चाहिए। Now when we accept it, the thing is that it has been already, the government has been already given the advice on how to form such different kind of certifications, etc. Government is working on it, and as you know, because government is working on it, not you and me, so there is going to be little delay. There are elections in between, and there are other issues and stuff. So, and film is somehow always taken the backstage this thing on the priority. So, लेकिन ये हो रहा है। इसके साथ सिर्फ सेंसरशिप का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेशन का मुद्दा नहीं होता, वो किस सर्टिफिकेट की फिल्म फिर बाद में प्लेटफॉर्म पर चलाई जा सकती है, टीवी पर बेची जा सकती है, टीवी पर किस समय दिखाई जा सकती है, ये सारी चीज़ भी इसके साथ गवर्नमेंट को सोच करके एस्टैब्लिश करनी है। ये अब पहले तो सिर्फ थिएटर था, आप जाते थे थिएटर में फिल्म देख लेते थे, दूसरा फिर दूरदर्शन आया, दूरदर्शन रविवार को फिल्म दिखा देता था, वो तय कर लेते थे कौन सी दिखानी नहीं दिखानी। अब इतने सारे माध्यम हो चुके हैं। मुझे अभी कोई बता रहा था मेरा मित्र कि 105 जगह है जहाँ पर फिल्में बिकती हैं। गवर्नमेंट जब एक सिस्टम को बदलेगी तो उसको उन 105 जगहों के बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिए ये समय लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट येस, सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज एंड सूनर रादर देन लेटर। Yeah. Could you give the mic to Yuvraj there? Good afternoon. My question is to Manoj sir. Sir, you've been in this industry for as long as we've known, and since the beginning of the entertainment industry, we've always seen this
very shrewd man with a mean mustache coming to tease a girl or to violate her in any sense. And I feel like that somehow, you know, promotes that it's okay to violate somebody. How do you feel that if something that is going on from so long, how would you take chances on this topic? Can you ask me the question again, please? Sir, we've always seen a Because I can't see you. Where are you? Sir. Oh, sorry, sorry. हाँ, आप कैमरे के पीछे हैं. Oh, sorry, sorry. हाँ, बोलिए, बोलिए. Sir, we've always seen एक बहुत लंबा सा आदमी with a very mean mustache comes in, you know, teases the girl, violates her, and somehow I feel like this promotes that it's okay to violate somebody. So if something that has been going on from so long, so how do you feel like in this age and generation you could, you know, deal with this? I got your question. आपने रामायण थोड़ी बहुत सुनी है? कुछ पता है? Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद. तो प्रभु रामचंद्र भी हैं, रावण भी है, मंथरा भी है. कौन थी मंथरा पता है? Yes, sir. जिसका नाम. थैंक यू. कैकई भी है. तो ऐसी मानसिकताएं सनातन काल से आ रही हैं, बहुत दिनों से. ये सिर्फ फिल्मों में नहीं फिल्माया जाता, लेकिन उस किसका आदर्श लेना है और किससे आइडियल बनाना है, वो हम पर भी निर्भर करता है, हमारी बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करता है. हमारा अपब्रिंगिंग आई थिंक ईश्वर की दया से अच्छा हुआ है कि हम क्या लें और क्या न लें. हमें रावण बनना है या राम बनना है? Yes, sir. करेक्ट. मिल गया जवाब? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. I will go a little further on this because it's a very interesting question जो बार बार सामने आता रहता है. It's glorification of crime in Indian cinema. लेकिन CBFC के एक्ट में सारी गाइडलाइंस के बाद एक लाइन है कि the film has to be seen in its totality. The message of the film has to be seen in its totality. अगर एक गुंडा छेड़खानी करता है और फिल्म के एंड पहुंचते पहुंचते अगर उसको सज़ा मिलती है हीरो की तरफ से या पुलिस की तरफ से, then the film in its totality does not glorify the crime. In which case, as Manoj says, that the takeaway from that film is not that you should go on the road of crime, but to refrain from it. So that has to be seen. Whatever you are saying, सवाल ये नहीं है कि एक बड़ा गुंडा छेड़खानी करता है लड़की की, उसके तो मार पड़ती है उसके ऊपर. सवाल ये है कि बहुत सारी फिल्मों में हीरो लड़की के पीछे पड़ जाता है, लड़की को वो बिल्कुल पसंद नहीं है शुरुआत में, लेकिन वो पीछे पड़ा रहता है, लड़की को प्यारा जाता है. दैट हैज़, ये कहानी जो है ना और महाभारत के समय से है. अर्जुन सुभद्रा का अपहरण कर लेता है, कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर लेते हैं. ये एक कल्चर है जिसको तोड़ना ज़रूरी है और ये फिल्म मेकर को तोड़ना चाहिए. ये CBFC का काम नहीं है, लेकिन yes, as a writer, as a maker, we have to see to it. Objectification of women is not a problem. Problem is not empowering the women. Men are supposed to objectify women and women are supposed to objectify men. That's how the world works. Problem is that while objectifying, you cannot disempower the women. And empowerment of women is what should come out of the films. And that is what my personal belief is. So, we will continue with this. एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जब एंग्री यंग मैन ये फिगर जंजीर ये फिल्म से फिल्मी दुनिया में आई, उसके पहले का अगर हीरो थोड़ा सा अगर फिल्मों के बारे में सोचे तो बड़ा शालीन, बड़ा बुझा हुआ, बड़ा गरीब. लेकिन वो एंग्री मैन की जो एक छवि है, उस छवि ने पूरा परिवर्तन कर दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए.
उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके बाद आप जो बोल रही हैं कि ऐसी फिल्में भी आई कि ग्लोरीफाइंग विलन को ग्लोरीफाई कर, तो हमारे यहां ऐसी भी कथा ये लिखी गई हैं। अब तो आगे जाके दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महाभारत बनेगा, लेकिन दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यास ने नहीं लिखा है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हमें क्या लेना है फिल्म में से या ओटीटी माध्यम में से? जो एक चीज आपके प्रश्न को भी मैं थोड़ा सा ऐड करके बोलता हूं, फिर आगे के प्रश्न के लिए जाते हैं कि ओटीटी माध्यम जो उपभोक्ता है, हम जो हैं और जो सेवा देने वाले हैं, ओटीटी माध्यम है, सरकार है और समाज है। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका चिंतन करना आवश्यक है कि हमें क्या लेना है। दूसरा, ओटीटी माध्यम या फिल्म, ये तो भारत में यही चलता है। जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि नागिन भी बनती है, क्या क्या बनती है, अब तो यंगस्टर ने छोड़ दिया, लेकिन एक ऐसे चक्र का कहना है कि यही चलता है टीवी में। यानी भारत की जनता या भारत की बुद्धिमत्ता का मापन ये लोग करते हैं, और इसका माध्यम सिर्फ पैसा कमाने का है। तो ये सारा चक्कर जो है, फिल्मों में ये सारी कथाएं हैं कि हर प्रकार की मानसिकता भी आती है, लेकिन हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो हमारा खुद का चिंतन है। थैंक यू। Thank you, and I also hope we also have equations and parallels drawn to the angry young woman very soon, because clearly gender is an issue that we are dealing with in terms of everything throughout. I'm going to quickly request Param Pujya Guru Prasad Swamiji to speak a few words, and I also urge the audience to please be here, because we will start with the student speakers. They've worked very hard, and this is a forum for the voice of the student. So please, requesting you all to stay back, and I would like to request Param Pujya Guru Prasad Swamiji from the Yogi Divine Society to speak a few words and bless us. सजान स्वामी महाराज ने जय। बहुत अच्छी थीम पर यूथ पार्लियामेंट की ये सेशन देख के बहुत खुशी हुई। मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है कि मैं मीडिया में सेंसर बोर्ड को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मेरा दो विचार आपके समक्ष रजू करना चाहता हूँ। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये भारत की संस्कृति है, हम ये भारत के लोग हैं, हम भारत माता के संतान हैं। जहाँ पर कापरा नाम का साइंटिस्ट अपनी टीम लेके ये भारतवर्ष में आया था, 6 महीने के लिए आया था, लेकिन 12 वर्ष तक यहाँ रुका, और बाद में जाके अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसको पूछा कि आपके यहाँ इतने सारे दिन क्यों रुक के आए, आपने क्या देखा? तब उन्होंने बोला कि भारत एक समृद्ध देश है, और वो समृद्धि क्या है? आंतरिक समृद्धि है, अंतर सौंदर्य है भारत में, अध्यात्म का देश है, अध्यात्म से संपूर्ण भरा हुआ देश है। संतों की ये परंपरा अखंडित ये धरती पर है, जो परंपरा के माध्यम से हम आत्मा का मोक्ष आ सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट बर्थ मेरा भारत में आए और मेरी आत्यंतिक मुक्ति हो सके। ये भारतवर्ष की गरिमा है, हम ये भारत माता के संतान हैं। हमें सभी लोगों को ये भारत माता के स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। हमारी विचारधारा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी विचारधारा संस्कृति के मुताबिक होनी चाहिए। ये विचारधारा होगी तो फिर सेंसर बोर्ड को क्या करना है क्या नहीं करना है हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या देखना है, किसमें से क्या प्राप्त करना है। ऐसा विवेक प्राप्त करने के लिए भगवान के रखे हुए पवित्र संत की गोद होनी चाहिए। वो जो भी आप रामचंद्र भगवान को मानते हो, कृष्ण परमात्मा को मानते हो, शिक्षावती को मानते हो, भगवान स्वामीनारायण को मानते हो, लेकिन भगवान को रखे हुए पवित्र संत जीवन में भगवान क्या करते? 1 मिनट में बात बतलाना चाहते कि वर्षों पहले जब द्रौपदी का स्वयंवर था, अर्जुन जी वहां पे पहुंचे। ये प्रसंग डिटेल में नहीं कहता हूँ, सिर्फ 2 लिटी में कहना चाहता हूँ कि वो त्राजवा में बैलेंस करके वहाँ खड़े हुए, नीचे पानी में से उनको ऊपर मत्स्यभेद करना था। नीचे उन्होंने दृष्टि की, लेकिन पानी इम्बैलेंस था, पानी हिल रहा था तो मत्स्यभेद नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने दिल से भगवान कृष्ण परमात्मा को याद किया तो भगवान ने ये सारा पानी बैलेंस कर दिया। हमारे जीवन में भगवान और भगवान के रखे हुए संत हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बैलेंस करने का काम भगवान और भगवान को रखे हुए पवित्र संत करते हैं। ये भारत की संस्कृति है। एक भी सदी ऐसी नहीं गई है कि भगवान के अवतार पुरुष
कि भगवान के रखे हुए उनके मैसेंजर ये भारतवर्ष में नहीं है, एक भी सदी नहीं है, तो हम ये भारत माता के संतान हैं और हमें ये विवेक प्राप्त करना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किसमें से क्या प्राप्त करना है, किसमें क्या नहीं प्राप्त करना है। अंत में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि 2020 में आत्मीय युवा महोत्सव का बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन हो रहा है। करीबन 4 दिन में 15 से 35 वर्ष की आयु लिमिट के करीबन 2.2 मिलियन पीपल 4 दिवस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं बड़ौदा में। आप वहाँ का डिसिप्लिन देखना, डिवोशन देखना, डेडिकेशन देखना, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि 2015 में इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया था तब मोहन जी भागवत वहाँ पे आए थे, उससे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे। तो ये देख के उन्होंने बोला कि ऐसी डिसिप्लिन, ऐसा डिवोशन, ऐसा डेडिकेशन हमने कहीं भी नहीं देखा। मोहन जी ने बोला कि मुझे ये गर्व था कि भारतवर्ष में आरएसएस जैसी डिसिप्लिन ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं है, लेकिन ये सारे यंगस्टर्स में इतनी शक्ति है, उनका डेडिकेशन देख के मुझे मेरा गर्व खंडित हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि युवान जहाँ जाना चाहते वहीं जा रहे हैं। सच्ची गोद में बैठे और सच्ची गोद में बैठे वही युवान, उनकी शक्ति ऐसी है, वो चैनलाइज हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। तो भगवान स्वामीनारायण, भगवान कृष्ण, भगवान शिव शक्ति के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसी पार्लियामेंट के द्वारा युवाओं को सच्ची दृष्टि मिले, सच्चा डेस्टिनेशन क्लियर हो सके और ये इसी माध्यम से वो भारत को विश्व गुरु बना के दुनिया में पगड़ों बाढ़े, ऐसी प्रभु के चरणों में अंतिम प्रार्थना। और ऋतुज भाई से कई लोगों ने इतना सारा आयोजन किया, उनका भी हम बहुत आभारी है। हम सच्चे भारत माँ का संतान बने, हम एक बने, नेक बने, आत्मीय बने और भारत माता को विश्व गुरु बनाए, ऐसी शुभकामना सभी को प्रस्तापित करता हूँ। सबसे ऐसी मंगल कामना। जय हिंद, भारत माता की जय।